Hello everyone, this is Unfiltered Opinions, an initiative by the Unacademy team. I am Shipra Chauhan, teaching GK in the SSC category. So there are some few questions which I am going to read it out or try to sort out these questions. So the first question is, what is the best way to learn biology for the SSC exam? See, technically there is no need to go only for the biology. Go for GK, the biology portion will be covered. Next question is, how frequently should one revise and analyze the syllabus? What should be the revision strategy for SSC exam? So basically revision is the key of success, we know this, and without revision you cannot go to any exam. Basically SSC के लिए आप हर segment में go for at least twice or thrice revision and then go to the exam, right? SSC के लिए strategy second इसमें cover किया है question, तो strategy के लिए make separate time for the separate subject. Maths के लिए separate, English के लिए separate time. Don't jumble or jungle, make the jumble of everything. Right. Next question is, what is the highest post or job in SSC CGL? See, for me, whatever you get according to your merit is your highest post. But SSC के technically अगर हम देखते तो examiner post highest होती है, income tax inspectors ये examiner, income tax inspector CBI. These are the highest posts. Some of the few highest posts. Next question is, does a student with average academics also think of clearing the SSC exam? Why not? Why not? Even this is SSC is showing a highest percentage of the success rate of the average student only. So if you have ever got 55-60% marks or 60s marks, don't lose the hope. Go for it. SSC can be cleared even with the average exam, and that too with the highest vote. So don't worry about it. Next question for this. What should be the preparation strategy for the physics in SSC exam? As I told you, no need to go for separately the physics or the biology or the chemistry. You can go for the GK course portion. In GK only you will be covering all three science subjects. So no need to go separate for each and every subject. Go for a combined, that is static GK. Next question is, what preparation pattern should a candidate follow to score well in the SSC exam? See, ideally being a GK teacher, I would suggest you go for the maths and reasoning first. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं GK teacher हूँ तो I would suggest you to go for GK. No, without maths you cannot clear the SSC. This is what I need to actually make you aware. So maths को कहीं जाने नहीं देना है, maths और reasoning अच्छे से करनी है, GK English सेकेंडरी रखना है. ऑल्दो हर एक दिन जो है ना चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बट ट्राई टू फोकस ऑन मैथ्स फर्स्ट. मैथ्स नहीं होगा तो एसएससी क्लियर नहीं होगा. दिस इज अ क्लियर कट आंसर. सो prepare your maths first and then the reasoning part, English and GK simultaneously. मैथ्स के लिए अगर 2 घंटे आप दे रहे हो तो जीके के लिए और इंग्लिश के लिए 1-1 घंटा जो है वो सफिशिएंट है. ठीक है. Okay, next question is, what strategies should a fresher use to start their preparation journey? See, for fresher, everything is a new part. Either it's a GK, it's a maths. I am just treating you as a person who had done its graduation. अभी graduation किया है, आप निकले हो SSC के खुले मैदान में और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है. ठीक है, तो आप सेंटर तक दौड़ोगे, लास्ट तक दौड़ोगे, दैट डजंट मेक अ सेंस. आप शुरू से शुरू करिए. आप सबसे पहले फ्रेशर हो, आप सबसे पहली चीज़ फ्रेशर में ये होना चाहिए कि आप को जो भी फ्रेशर जो है ना उन लोगों को क्या करना है, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो. दैट इज द ओनली वे. आप पहले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, पेपर देखिए, उनको चेक करिए, वीक एरियाज नोट डाउन करिए एंड उन पे काम करिए. दैट इज द ओनली स्ट्रैटेजी यू कैन फॉलो. So how to avoid confusions and nervousness in some of the last day of the exam? No need to get confused. If you have done enough preparation, there is no confusion. Confusion उनको होती है जिनकी preparation बीच में होती है, मतलब ना तो बहुत अच्छी है ना बहुत खराब है. जिनकी बहुत खराब है they don't bother, लेकिन जिनकी बहुत अच्छी है they also don't bother. तो जो आपकी जो है ना कि आप नहीं क्लियर हो, आप क्लियर नहीं हो, आपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं किया है, तो आपको कन्फ्यूजन होगी. सो फर्स्ट प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, गो विद अ फुल कॉन्फिडेंस. कई बार कॉन्फिडेंस से अच्छी चीज़ें हो जाती हैं रादर देन नॉन कॉन्फिडेंस पर्सन अगर जाता है.
Okay, so the next and the last question is how to maintain emotional intelligence as it plays as important part in your preparation. See, guys, there is an important thing in this. Do not get emotional for this exams and all. These are not the life. These are the part of your life. Just try to understand this. और उसमें अपना फैमिली का सपोर्ट लेके रखो. इमोशनल थिंग्स कैन बी मेंटेन्ड विद द फैमिली ओनली एंड जस्ट मेक योर माइंड वेरी क्लियर कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ एनीथिंग. सो जस्ट ट्राई टू बी फोकस, काम, कंपोस्ट एंड प्रायोरिटाइजिंग. मैं प्रायोरिटाइज वर्ड बार बार बोल रही हूँ क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो एसएससी का एग्जाम देते हैं, दे डू नॉट प्रायोरिटाइज देयर थिंग्स. वो कुछ भी पढ़ते हैं, सब हचड़ पचड़ करके जाते हैं, फिर एग्जाम्स में भूल जाते हैं. तो प्लीज़ जस्ट प्रायोरिटाइज योर थिंग. Don't be emotionally weak because this exam actually tests your patience and your emotional level. Okay, these were some questions. If you have your own queries or the questions, you can comment below. And for such videos, you can like, subscribe this channel. Thank you so much.